All right, good evening. Welcome to the stream. We are live with our Nasdaq and hopefully gold trades if we see any. And with that, I'll just want to continue. The market has just opened and I see really good buying potential everywhere. The gold is the one that is dropping a bit, otherwise everything else is good. Nasdaq looks good to bounce. There's a weak 1 hour fair value gap at the futures market at 19,290 280 290 range. So Dow has already rallied 500 points including pre-market, and let's see what market brings us today. Right now market has just opened, so let's let it do its thing first before we continue trading. If you find opportunities, I have a range that I think कि ये 19,300 320 40 लगभग इतना तो जाना ही चाहिए. So that is what I am hoping for. Currently 50 पॉइंट लगभग का ड्रॉप दे के 50 पॉइंट अपवर्ड्स मूव, अब वापस से थोड़ा सा सेलिंग ये दिख रहा है हमें नास्डैक पे. तो इट्स अ यूजुअल नास्डैक थिंग, राइट? इट बैलेंसेस इट्स ledgers and everything whatnot. That is what it is doing. I think my fan is making some noise. I'll just switch it off. The weather is really good today. It's rainy. काफ़ी बारिश हुई. अभी भी कुछ shimmers हो ही रहे हैं. And so yeah, let's continue. So I have C traded open on my chart. And C trader में मैं trade देख रहा हूँ अभी के लिए. So I have different time frames. One for gold. So I don't need gold here. So I'll just go with US 30 because I would want to see what it is doing. And अभी के लिए पहले इस पे ध्यान देते हैं. So this is 15 minutes, this is 1 minute, and this is hourly. So what I need is a 5-minute chart here. Yes, this is good. And a 2-minute chart here of the US 100 same. So let's keep these things together. Can we? Yeah, that is nice. Right, great. So let's keep it at 2 minutes. So going from higher to lower, and let's see. So I also have bigger time frames opened on my another screen, which is 1 hour, and then we have 4 hour and everything. Currently we are seeing some good drops, and I would like to mark this on my fib levels. So this thing that it rallied from this place to here, I would like to see if it bounces somewhere from here. We are dropping as of now. $160 is our 0.5 level on the futures chart. To 19,021 is on our indices part. Okay, let's hope for the best. Gold's dropping. Gold can go 3188 at least, so that is 100 more pips on the downwards territory. We are leaving big spikes. Nasdaq ऊपर से futures market पे काफ़ी बड़े spikes दे रहा है. 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चारों कैंडल पर स्पाइक्स हैं अभी तक तो. ड्रॉपिंग. That's a nice drop. This is where I would think that it will give us few points. So it has bounced from 22, I guess. Yes, 23. That's 20 points there. We're bouncing upwards. Let's wait for a good confirmation candle here. We already have tapped 0.5 on the futures market and have already given like a couple of points. Yeah, okay. We still have selling pressure. That is a good area. It might give us a bounce from. Apple is 5.2% up. Nvidia 2% up. Tesla 2% up. Intel 3% up, and everything else is in positive, everything green.
VIX, US VIX is down minus 13%. So that gives us a good opportunity and gives us a good idea अपना bias जो है recency bias बोल सकते हैं शायद इसे, तो वो पॉजिटिव की तरफ ही है अभी तो. Okay, we just have tapped 0.61 percentages. I think we have a good opportunity to buy here. I'll still wait for a candle. If it actually gives us a signal, no, we're selling off. I think we might get liquidity first and then continue anywhere else. We also have a trend line on the futures market near 19,100, 19,080 levels. Touching VWAP almost on the 5 minute, also on the 15 minute, almost about to touch the 50 moving average. Okay, we're dropping. I would think that it might go even lower than expected, because the 15 minute candle is a pretty big red candle, right? This one here. इसका नीड खत्म हो गया, so I'm just going to remove this here. Good drop. I still feel that we might bounce up about to. I think we might be bouncing anytime now. थोड़ा सा और liquidity लेने नीचे जाने का ऑप्शन अभी भी दिख रहा है मुझे, but about to bounce. अब थोड़ा सा टाइम के बाद bounce कर देना चाहिए हमें. Okay. थोड़ा सा पुश आया था अपवर्ड्स VWAP टच करके, बट अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है. थोड़ा सा नीचे अभी भी जाने की उम्मीद है मुझे कि जा सकता है. We have still some room here, but let's see. बाइंग आई है थोड़ी. That's a good 40 point upwards. Still pushing lower. More sell side, right? Okay, selling. All right, I think we just tapped the 200 moving average. This is a good time to bounce, guys. If you want to bounce, just bounce. Nvidia and Apple and everybody. No, still dropping. Are we going to see 19,020 on futures?
Oh, this is it for you. I think you want to touch 19,020, isn't it? Yep, that's a good level to touch. Mm-hmm. 45, 30. You're done selling? Well, not yet, I guess. Okay. You just put Facebook, Amazon, and Broadcom on the negative. Nvidia is 0.6 up only. Tesla only 0.8% up. So that is some profit booking outright. Profit booking there. I think this is a good place where you should bounce, to be honest. Let's see. Okay. Are you trying to go for the day low? Is that what you're doing? It seems like. No, that's a bad place to buy right now. So I'll just hold. It's a pretty good drop. Might be going for the day slow. We just tapped 19,000 and pushing up. Thoda sa, is that dead cat bounce, or are you going to into the buy territory? थोड़ा सा पुश तो आ रहा है ऊपर की साइड. Not sure how good is that. Okay. All right, pushing. Looks like a good upwards move. Looks like we might have taken out all the liquidity here. Okay. अब सर कहाँ घुसे जा रहे हो, दिख क्यों नहीं रहे हो? Okay.
I think we are going for the day's low here. I did not expect that drop, to be honest. Dropping, still dropping. I'm seeing some buying pressure building. Can we add volumes? Nope. You just have tick volumes or what? ऑन बैलेंस वॉल्यूम मुझे चाहिए नहीं, टिक वॉल्यूम ही देखते हैं यार. Now tick volume also thing is कि तो ये गंदा सा कलर है. I just want to see blacks. Now I see some buying volume coming in, some buying pressure coming in. Let's wait for this candle to close. I would definitely like to buy here, but until unless we have some good positive candle above closing above here, this is where I would not like to buy. It's a trap zone. Seeing some good volumes coming in. Let's see if we have the potential. Okay, seeing some good positive volume here. Now this is where I would like to buy. Let's just wait for this candle to close. Right, trying to push up. Let's push up. Let's go make a good candle. Come on. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. All right, that's a good candle. This is where I would like to certainly buy. So let's just buy here, keeping my SL below this. So this is where I would like to keep the SL, hoping to point this much at least. I will also like to track the Fibonacci levels, the drop of this, a total drop here. So 50% is right here. अब देखते हैं क्या करता है. थोड़ा सा करेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है. Still don't see why it would want to go down now.
इसने अच्छे कैंडल्स बनाए हैं, 3-4 रेड 4 पॉजिटिव कैंडल्स स्ट्रेट अवे दिए हैं. There's a hammer, and then we have a kind of a marubozu on the 1 minute, then we again have a hammer, and then we have a normal looking candle with spikes, wicks on the both sides. So, and all those are green, right, on the 1 minute time frame. So I don't see this going down, but it went down. That is okay, not a problem. Okay, so that took us out, and then I'm seeing some good volumes right here. Let's see. I would like to enter this again, so I'm going to. I'm going to keep my SL below this. This now. I think we might have a good opportunity here. Let's see. I'm in a good upwards positive opportunity, I think. Let's see क्या होता है. चलो सर, चलो सर, चलो सर, अब तो निराश मत करो हमें, अब तो निराश मत करो. हमें उम्मीद है कि आप एटलीस्ट यहाँ तक जाओगे, एटलीस्ट यहाँ तक. तो पहले तो यहाँ तक चलते हैं. I would want to add more positions on this, to be honest. I still think this push has good potential, and I would like to add 5 more. So I'm going to. अच्छा कैंडल क्लोज देता नहीं है ना यार, ये दुखी करता है हमें. Okay, waiting for a good candle. That should give us a vertical up. मतलब V recovery यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेड थी कि आज हो सकती है, अभी तक तो नहीं दिख रही. स्टिल लेट्स सी क्या होता है. Okay, trying to check something. Okay, that's a higher low format on the 1 minute. Hopefully this is where it recovers from, because अब अगर ये लो इसे भी बना देता है तो यहाँ से भी अगर रिकवर नहीं करता फिर तो थोड़ा रुकना पड़ेगा हमें. ज़बरदस्ती कोई ट्रेड में घुसेंगे नहीं फिर. I still feel that it should go up. अब अगर क्वांटिटी ऐड भी करना होता ना मुझे, तो मैं ऐड करके स्टॉप लॉस यहीं लगाता. तो इसीलिए मैं ये देख रहे हो आप, ये कैंडल्स के कारण मैं नहीं लगा रहा हूँ. ये थोड़ा सा मूव ऐसा है जो डाइसी है. You're looking for a good 1-to-1, I think, huh? You know. So if my stop loss is 341, my trade, no, that is lesser than 1-to-1. So what I'll do is I'll keep this here, make it 1-to-1 at least, and let's see what does it bring us. Right. Do you really want to? Do you really want to do that? Don't see a lot of volumes on this one.
So what happens is this is an inverted flag and pole pattern on the 1 minute. Does not make any sense to be honest. इसका कोई सेंस नहीं लगा सकते अपने. बट यूजुअली क्या होता है इसके बाद जब ये ऐसा बनाने के बाद मूव जब देता है ना तो दैट इज़ अ रियली रियली गुड मूव, राइट. सो दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू डू. लेट्स सी क्या करता है. आई थिंक द पीपल हु आर अबाउट टू बाय आर अबाउट मतलब दे आर कंसोलिडेटिंग और बिल्डिंग अप पोजिशंस. Okay. Is that the push we're waiting for? The 5 minute does not tell me कि उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसमें. Still selling off. Okay, I'm going to add 5 more quantities here and I'll keep my stop loss really low, matlab really strict, right. I'm going to add this here, keeping my SL right here. अब देखते हैं. I really feel this is going to push up. That was a very positive candle. Good push. Waves आने का जो प्रेप होता है ना वो दिख रहा था मुझे इसमें, इसीलिए मैंने एक और ऐड किया था इसमें. Come on Nasdaq, come on. Show me that you can do it. Come on. No. Nevertheless, कोई बात नहीं. So it might make a double bottom or on the 1 minute maybe, and then it might want to go up. If we keep this here, we already are at 49. No, that is, I don't want to keep that here. I still want to stick here. So we lost around 477 already. Okay, so these are the 3 contracts that okay, no, there's these 2, 228, 328, and then a 90. That's 477, and actually no, that is the total realized thing, huh?
ऑर्डर हिस्ट्री तो मैंने देख ही चुका हूँ मैं, स्टेटमेंट नहीं चाहिए यार मुझे, मेरे को आज का दिखाना है यार, पीरियड टुडे। 416 इज द व्हाट वी हैव लॉस्ट। ओके, नेकलाइन आ जाओ, नेकलाइन ब्रेक कर दो, चलो चलेंगे फिर क्वांटिटी ऐड करके ट्राई करेंगे दिस वन मोर टाइम। Show them we can do it. Not saying some goodbyes. All right. Let's see. Let's buy one more. Keep my SL right here. And my TP will be this one, can be here at least. And this one is at the breaker block right here. Come on. Push it. I'm going to keep my SL restricted now. So bringing these two here now. Yes, great. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Keeping SL to break even now. Keeping TP up. So that's my TP right there. Going to SL this here so that we are completely break even. I can also move this here. Let's go, sir. Yeah, I don't think this is going to sell anymore. I still feel, I have a good feeling that this is going to push up now. Yes, sir, let's go. Yes, good push, good push. Okay, trailing this one here, and this shall be here. I would like another 500 more. Okay, so let's wait for that. This is where I should book it. Should be, I am closing one of them and keeping it here so that something is made out of this trade. And let's see. No, so I'm closing that too. So the neckline का space जो है इसका V line का space था ये already fill कर चुका है approximately, इसीलिए मेरे को बहुत इस पे ना भरोसा होता नहीं है. If you see, if you even take this one here and keep this here, और जगह था अभी जाने का वो इसको यहाँ पे, बट मेरे को लग रहा था कि दिस इज इनफ फॉर मी. टुक इट. आई थिंक अब ये सीधा सीधा ना ऊपर जा सकता है, मतलब क्रॉसिंग दिस एंड गिविंग गुड अपवर्ड्स पॉइंट. Apple is 5% up, Tesla is 2.5, Intel is 4.5 actually, Apple is 4.56 now. So overall काफ़ी पॉजिटिव है सब कुछ. Amazon is like nothing, 0.3 minus. Broadcom is 0.3 minus. Overall everything is in positive. Dow Jones on the other hand is 458 points upwards, US 324, US 100, so this one.
So I realized, what do we say? We have made $222 on this one today. Mota moti. आई थिंक ये तो यार फॉक्स है, मतलब ये बस ऐसे ही झूठ बता रहा है आपको कि ऐसा है कि मैं नीचे जाऊंगा। आई थिंक ये अभी भी ऊपर ही चला जाएगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। गोल्ड ऑन द अदर हैंड इज अप्रोचिंग, स्टिल सम टाइम टू गो। 3188 जो मैंने सोचा था अभी तक तो नहीं गया, 3193 ही गया लास्ट, और उसके बाद फिर इसने 170 पिप्स अपवर्ड्स मूव दे दिया, एक डबल बॉटम बनाया। अब मे बी दिस इज़ अ गुड डबल बॉटम दैट गोल्ड माइट टैप एंड गो अप। लेट्स सी ऑन द 1 hour टाइम फ्रेम। नोप नोप, दैट्स नॉट अ गुड बाय ऑन गोल्ड टुडे। अगर आप गोल्ड बाय करने वाले का सोच रहे हो अभी छोटे टाइम फ्रेम्स पे 15 मिनट पे या कुछ भी, मुझे तो लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर ही दिख रहा है कंटिन्यूसली, एंड आई डोंट सी एनी गुड reason to buy until unless it reaches 3177 3178 region। मेरे पास तो कोई पॉजिटिव रीजन नहीं है इसमें घुसने का, तो आई विल नॉट एंटर दैट, राइट। एंड Nasdaq being Nasdaq is doing drama। My camera was off। Oh yeah, so क्या हो रहा है कि मेरा DSLR बहुत जल्दी ड्रेन हो जा रहा है, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। आधे घंटे भी नहीं चलता वो ड्रेन हो जाता है। तो मैंने फ़ोन को लगाया था, बट फ़ोन की सेटिंग कुछ चेंज करनी पड़ती है, मतलब टू मेनी थिंग्स टू फैम। आई ऑल्सो वॉन्ट द वीडियो टू बी वेरी क्लियर एंड क्रिस्प एंड द ऑडियो टू बी क्लियर एंड क्रिस्प। आई वॉन्ट पीपल टू स्टार्ट ज्वाइनिंग, भले 5 मिनट के लिए कोई आए, स्टार्टिंग में लोग आएंगे, लोग बताएंगे कैसा क्या है, इम्प्रूव करना है नहीं करना। आई वॉन्ट टू ग्रो विथ पीपल। अकेले ग्रो करने में क्या मज़ा है? और ग्रो विथ पीपल का मतलब ये नहीं है कि बस बताऊं या फिर बाई बताऊं, सेल बताऊं, या मैं को कोई लोग बताएं। मैं तो कोई गुरु हूँ नहीं किसी का, ना मैं इतना अच्छा अभी तक सोचूंगा कि मैं कोई बहुत प्रो ट्रेडर हूँ। हम जस्ट वांट टू ग्रो विथ पीपल हु आर लाइक मी, who can share mindsets, who can share their thoughts कि this is what is working for us, this is what is not working for us, what is the psychology and everything। So that was a good drop from that candle। अब ये फेयर वैल्यू अब कितना सुंदर है। नास्डैक के ऊपर अब मेरे को भरोसा नहीं है, बट ये फेयर वैल्यू अब इतना सुंदर क्यों है मैं आपको बताता हूँ। बॉडी पूरी 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 की बॉडी इसकी एम्प्टी है ना। बॉडी में कहीं भी इस कैंडल, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल की बॉडी कहीं पे भी नहीं एंटर कर रही है। तो दिस इज़ अ वेरी क्लीन फेयर वैल्यू गैप, दिस इज़ वेयर आई शुड हैव सोल्ड, बट बिकॉज नास्डैक पे मेरे को भरोसा नहीं होता इसीलिए मैंने बेचा नहीं। एक मैं फ्यूचर्स पे भी देखना चाहूँगा, डिड इट मेक समथिंग लाइक दैट और नॉट। यस, फ्यूचर पे भी एकदम क्रिस्प वहाँ से 173 से ड्रॉप हुआ है, और हमने 100 पॉइंट का ड्रॉप दिया है वहाँ से। दैट्स नाइस। इफ ओनली नास्डैक यूज्ड बिहेव्ड लाइक ऑल दीज टेक्निकलिटीज़ के साथ, तब बात ही क्या थी। नास्डैक बिहेव करता है, वैसा बात नहीं है, बट या डज नॉट वांट टू फॉलो, मतलब 20 पॉइंट दे के आपको वापस पुश कर सकता है अपना, ये करता है। So we did not reach that, this was our initial target and that has been hit, and we I think got out nearby only, right? History देखते हैं, we got out at 1929 and this reversed from 36 7 पॉइंट पहले निकले अपने, which is nice, good only। तो अगर अभी एक सिनारियो क्या है जो मुझे दिखता है, सो दिस
इज मोर ऑफ अ डबल बॉटम, राइट। अगर यहाँ पे इसे देखा तो ये डबल बॉटम बना रहा है। अब अगर इसे ये पूरा फिल करने नहीं जाता है और अगर यहीं कहीं से रिवर्स करता है तभी अच्छा अपवर्ड्स मूव दे सकता है। दैट इज व्हाट आई बिलीव। यहाँ से तो रिवर्स जल्दी करता नहीं है ये, मतलब आप समझ रहे हो ना, इस एरिया से कहीं से रिवर्सल दे देता है तो ये अच्छा मूव दे सकता है। अगर ये इतना नीचे जाता है टैप करने और लिक्विडिटी नीचे ग्रैब करने तो फिर डे लो तक जा सकता है, विच इज़ 800, 790। लेट्स सी। We are losing some gains on Apple, some gains on Tesla. US stocks set for a bid open on Trump's tariff reprieve for some electronics. Okay. What are you doing that already? Is that what you're about to do? That's more of a trend line here. Oh, I would like to buy this. I'm going to buy that. अरे अरे यार, बहुत परेशान करते हो तुम. So keeping only that much as stop loss, I'm going to buy that. मैंने डिसाइड किया है कि मुझे जहाँ भी लगेगा कि आई शुड बाय हियर, आई शुड सेल हियर, माय बैक ऑफ द माइंड मेरे को पुश आता है, तो अगर मैंने एक स्ट्रिक्ट एसएल भी रखा है तो मैं उसे बीच में निकलूँगा नहीं। अगर लग रहा है बाय आता है तो बाय लग रहा है, आपको लग रहा है, आपको फील आ रहा है, आपको चार्ट देख सकते हो, अगर वो लग रहा है कि दिस इज हाउ नास्डैक बिहेव्स एंड यू माइट बाय हियर, आई विल बाय। बिकॉज बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मैंने ऐसी मिस की है जो मुझे पता था, या मुझे लेवल्स मैंने मार्क कर रखे थे अपने दूसरे स्क्रीन पे और मैंने वहाँ से नहीं लिया क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 लॉसेस ले चुका हूँ, ऐसा हो चुका है पहले भी। तो अब अगर ये ऐसे हिट करता भी है तो आई एम आउट फॉर द डे, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट ट्रेड, राइट। ये मेरे लिए हो जाएगा दिन का, कोई इशू नहीं है मुझे। बट अगर मुझे लगता है कि ये ट्रेड मुझे लेना चाहिए तो आई टेक दैट ट्रेड, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। Okay, I think this is going to hit my SL. Yes. Yes, sir, you are going to hit the SL. Yes, I know. Excuse me. All right. So you trapped us there and then you hit the SL. कोई बात नहीं, होना नहीं चाहिए था वैसे तो यार, ठीक है। तो हायर हाई हायर लो, एच 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 एल एच 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 एल, equal lows and then higher highs, and then we still have higher lows, now lower high, and then we have, all right. मूड आज सर का थोड़ा सा डगमगाया वैसा है। This is where do you want to go क्या, or do you want to tap all this first? ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी नहीं है, ओवरऑल मार्केट कंडीशंस अच्छा नहीं है, बट टेक स्टॉक्स के लिए थोड़ा अच्छा रिलीफ है, सब कुछ है। टेक स्टॉक्स ने प्री मार्केट काफ़ी अच्छा मूव दे रखा था और उन सब चीज़ों की वजह से मुझे लग रहा था कि दिस इज़ अ गुड मार्केट टू बाय, राइट। अब गोल्ड का कैसा है, गोल्ड डबल बॉटम पे डबल बॉटम बनाया जा रहा है, ट्रिपल बॉटम बना चुका है पर ऊपर नहीं जा पा रहा, अच्छी कैंडल्स नहीं बना रहा। I'll show you what I'm talking about gold.
see what gold is doing. Look at that, just look at that. Double bottom fail, double bottom upwards, this bigger double bottom upward move. तो ये मूव वैसे काफी अच्छा ही था यार. तो कितना लॉट है यहाँ पे अपना 0.24 लॉट लेते 3194 से 3209. ठीक था, मतलब ये ट्रेड लिया जा सकता था. 5 मिनट पे दिखाऊं मैं आपको तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. वैसे ये देखो आप, डिंग 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 डिंग. अब यहाँ से हाफ वे आके आपको ऊपर चल जाना चाहिए था, बट ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव है, इसीलिए मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ इसमें. तो इसने एक 5 मिनट पे डबल बॉटम बना तो दिया है यार. देखते हैं इनको मन क्या है इनका. हाँ, फिर से स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा के मेरे को फंसाना चाहते हो, या फिर ये वो मोमेंट है जहाँ पे मैं ऑलरेडी 2 बार लॉस या 2 स्टॉप लॉस खा चुका हूँ, इसीलिए मैं घुसूंगा नहीं और फिर आप यहाँ से एक्चुअली ऊपर चल जाओगे. यही करना चाहते हो. इट्स क्रेजी समटाइम्स. Are you guys liking the background music? Are you? टिंग डोंग. अब इसका मुझे अभी काम नहीं है वैसे तो. Just to remember this, 19,050. Okay sir. ये गंदा सा डबल बॉटम. I don't like that double bottom. Still pushing low. यार गोल्ड आजकल क्या कैंडल प्रिंट्स कर रहा है, मतलब अनबिलीवेबल. अरे भाई सही में तो मूव करना चाह रहे हो क्या यार, मुझे अफसोस करवाना चाह रहे हो क्या. ओके नो. अब तो मुझे लग रहा है कि आप गलत करने वाले हो मेरे साथ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अरे नहीं यार, ये कैसा सा पैटर्न है. 15 मिनट का पैटर्न आप देखो यार, मैं बता रहा हूँ 15 मिनट का पैटर्न देखो आप. ये बाय के लिए अच्छा नहीं है. ये कैसा सा पैटर्न है यार. ये पहले ऊपर से सेलिंग प्रेशर, नीचे से सम बाइंग प्रेशर, 3 पॉजिटिव कैंडल्स ऑन द 1 मिनट टाइम फ्रेम. मैं क्या ही बताऊँ यार, गंदा सा पैटर्न है. बाय करने का फील तो आ रहा है कि ये कर लेना चाहिए भाई. एक और कैंडल बनने का वेट करते हैं, देखते हैं. This tells me not to buy. This tells me to buy. The 15 minute tells me not to buy. The bigger time frame is more expected, so I am avoiding this buys. All right, not buying it. अफसोस हो जाए तो हो जाए, बैठ के पढ़ेंगे साले को कि क्यों बदमाशी कर रहा है, बट अभी के लिए वी आर नॉट बाइंग दिस. आई एम नॉट बाइंग दैट. लुक एट दैट, हाउ इज इट ल्योरिंग अस. बार बार मेरे को ये दिखा रहा है खरीद ले खरीद ले खरीद ले. ऐसा बहुत अमेच्योरली बात कर सकता हूँ मैं शायद कभी कभी, बट दिस इज व्हाट इट इज डूइंग, राइट. आई मीन इफ यू कैन रिलेट विथ मी, इज दिस व्हाट इज इट नॉट डूइंग दैट. ओ नीचे से अच्छा प्रेशर है, अब ऊपर से खरीद ले. अब तो ये जाना ही है भाई, अब तो बस खरीद के बैठ जा, स्टॉप लॉस लगा के, वो हिट होने वाला नहीं है, ऊपर जाता जाएगा, 400 पॉइंट ऊपर चला जाएगा. ऐसा ऐसा फील आ रहा है.
मैंने भी ये बात बोला भी है कि ये इसके आसपास से रिवर्स कर जाएगा तो ये अच्छा. Okay, to not regret this, I am going to enter with very small quantities, like one quantity here. I don't even want to buy with that much of quantity. See, I'm talking very conflicted statements, right? I'm giving you very conflicted statements. मैं बोल रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा नहीं लग रहा बाय करना, इस पे भी अच्छा नहीं लग रहा बाय करना, ये बस फंसा रहा है छोटा टाइम फ्रेम की खरीद ले खरीद ले खरीद ले. बट ये बाइंग की मतलब जगह दिख रही है मुझे यहाँ पे बाइंग की यार, इसीलिए मैं अपने आप को जस्ट बिकॉज ये ना करूँ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कीप दिस हियर, एक्चुअली समवेयर हियर. ठीक है, इसकी लिक्विडिटी भी अगर ये लेता है, इसको इसने टैप किया है क्या? हाँ, ये ऑलरेडी टैप करके यहाँ से बहुत अच्छा मूव दिया था एक्चुअली. वी शुड हैव bought here to be honest. Any which ways, this is where I'm keeping this. अब ये नीचे जाए तो जाए, ऊपर जाए तो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा, मैं और कुछ नहीं ट्रेड करने वाला इसे फिर. ठीक है गाइस, गोइंग टू लीव द स्ट्रीम अभी ऑन थोड़ी देर के लिए. So I'm going to take a break here and I'm going to leave the stream on for some time. आके देखते हैं.
All right. I'm back. Going to remove this first. So our break is over, and I see we have moved upwards of 75 points. Okay, well, that is nice. So let's do something. Let's just trail this. Now we can let this run, and that will be completely fine. गिवन मंडे है तो बहुत एराटिक मूव्स नहीं है. अब क्या है कि यहाँ पे मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि अरे जैसे यहाँ पे मैं यहाँ देखता कि अरे ये 3 नेगेटिव कैंडल नीचे जा रहे हैं, मैं यहाँ बुक कर लेता. बट बिकॉज वी हैव टेकन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड I am happy with break even here, so that is why I don't want to book anything right now. I'll just want to let it run. Let's see what does it do. On the gold end, gold actually have reversed from 3193.9, so 3194 से gold reverse कर चुका है अभी तो. On the 5 minute, did it give you any good trades? So ये क्या किया इसने, डबल बॉटम जो बनाया था उसके बाद इसने वापस से एक ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ सेटअप बना के फिर वहाँ से इसने मूव दिया है. एंड द काइंड ऑफ मूवमेंट दैट इट हैज़ गिवन, सो आई विल गिव यू 5 मिनट्स की एंट्री जो मैं ढूंढता हूँ यूजुअली एंगल्फिंग कैंडल्स की. तो जैसे ये एक एंगल्फिंग कैंडल था हमारे लिए, मतलब 3 कैंडल सेटअप था सॉरी. तो यहाँ पे मैं बाय करता, ठीक है, बट ये मुझे स्टॉप लॉस यहाँ रखना पड़ता मिनिमम. तो मैं यहाँ पे तो मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ये नेगेटिव ही था, तो मेरे लिए कोई ट्रेड वैसा बन नहीं रहा था यहाँ पे. तो यहाँ पे इसने वैसा कुछ किया नहीं. ये अगर एंगल आप देखो, ये कैंडल भी एक बड़ी कैंडल बनती ना, लगभग यहाँ तक की बॉडी यहाँ तक क्लोज होती, तो फिर मैं एक ट्रेड ले सकता था यहाँ पर. बट न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क पे जिससे बिहेव करते. अनदर थिंग, लेट्स सी इफ देयर वाज समथिंग दैट वी शुड हैव बीन अवेयर ऑफ. नो. सो मैं ये देखना चाह रहा था कि लंदन एशिया लिक्विडिटी ऐसी कुछ है क्या, बट ऐसा कुछ नहीं है. हम लोग लंदन के बाद मतलब बहुत नीचे ऑलरेडी है लंदन से. और सो दिस हैज़ टेकन अ सपोर्ट फ्रॉम अ स्पाइक विच ऑकर्ड ऑन 11th of April 12:20 पे लंदन के टाइम पे एक कैंडल बनी थी जहाँ से उसने अपवर्ड्स मूव दिया था एक बड़े वाइड रेंज कैंडल के साथ. और तो उसने वहीं से बाउंस किया. आई शो यू. So I marked this area कि यहाँ से बाउंस आ सकता है, but it bounced from here itself. I think this is very, yes, it bounced from here itself. And that is okay. I wanted 3188 at least, but नहीं आया, कोई बात नहीं. इसने यहाँ से बाउंस दे दिया है और नेकलाइन भी ब्रेक हो चुका है. उसके बाद अब अपवर्ड्स मूवमेंट भी है. So we might expect targets up till here, like another 50 pips. And if the momentum continues, we might go up till here, another 50 pips onto that, and then here. So a total of 150 pips का मोमेंटम अभी भी है हमारे पास. लेट्स सी क्या होता है. We're ranging right now on Nasdaq.
ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नास्डैक के साथ आप हो नहीं सकते हो. सो अब जब ये अब नाउ दैट इट इज़ ब्रेकिंग ऑल दिस एंड दिस ट्रेंड लाइन ऑल्सो ऑन द 15 मिनट. लेट मी शो यू 15 मिनट पे क्या मुझे दिख रहा है. अरे भाई आप तो यहीं रहो. हाँ, हियर. सो हाँ, so this trend line if you see, if I tap what, अच्छा ये इस पे नहीं बन रहा. ये फ्यूचर्स के चार्ट पे बन रहा है. तो एक ट्रेंड लाइन है जिसने इसे टैप करके बाउंस दिया था. जो पहला ड्रॉप आया था हमारा मार्केट ओपन होते ही 15 मिनट के कैंडल पे, ये वाला. तो यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन बन रहा है. तो वी कनेक्ट ऑल दिस. तो ये इधर से क्रॉस हो रहा था, तो इसने यहाँ से बाउंस दिया था. नाउ दैट इट इज़ नॉट अबाउट टू इट हैज़ टैप्ड दैट, वो ट्रेंड लाइन इसने टैप फिर से कर दिया है. अभी जस्ट टैप किया. तो ये जो ड्रॉप है ये ट्रेंड लाइन का टैप है. अब ये इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नेगेटिव दिख रहा है ना. आई थिंक वी माइट गो इनटू अ नेगेटिव टेरिटरी राइट नाउ. टेस्ला भी जो पॉजिटिव था 5% और 3% जो भी था, अब नेगेटिव आ गया. इनवीडिया 1% पॉजिटिव है, एप्पल 3.3% पॉजिटिव है, और कुछ नेगेटिविटी है. मार्केट खुलते ही US30 450 पॉइंट लगभग प्लस था, तो अभी 340 पॉइंट्स पे है. ओवरऑल दिस इज़ अ गुड सेल पोजिशन एज पर थ्योरी, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से बोलूँ तो. बट अभी क्या है, ये इसका लिक्विडिटी लेके यहाँ से भी जंप कर सकता है. सो आई एम नॉट गोइंग टू रिस्क एनी ट्रेड राइट नाउ. आई वुड वेट, क्योंकि ये स्पाइक मारेगा तो झट से ऊपर मार देगा, इसीलिए मैं वो नहीं चाहता हूँ करना. वेट करते हैं, देखते हैं ये क्या कर रहा है. डे लो भी जा सकता है विच इज़ 18,931 ऑन द फ्यूचर्स. वैसे तो ज़्यादा बड़ा गैप है नहीं फ्राइडे का जो क्लोज था और ऊपर में. इट इज़ अ म्योर, आई टेल यू, इट इज़ अ म्योर 88 पॉइंट का गैप. सो आई थिंक इट माइट गो फॉर द डेज लो, बट पता नहीं यार, यहाँ पे ना ये थोड़ा ट्रिकी है. I would want to make at least 1% of my equity इसमें जो है. So that is why I want to sell this, but not very sure about this यार. But जो मन कर रहा है, अपने डिसाइड किए थे वो करेंगे. So let's go with half of our quantities and let's try to sell this, keeping SL tight, keeping SL here 200 points का SL for at least 300 points का profit. स्ट्रेट अवे टेलिंग अस कि बेटा लग गई है आपकी. देखते हैं, मतलब एग्जैक्टली वहीं से बाउंस कर रहा है जहाँ से हमने इसको सेल किया है. कोई बात नहीं, अगर हिट होता भी है तो कोई इश्यू नहीं है. देखते हैं. एंड इफ दिस कंटिन्यूज लोअर, मतलब अगर ये अभी से वापस नीचे आता है तो फिर एक और ट्रेड ऐड कर सकते हैं इस पे, बट नॉट राइट नाउ. लाइक देयर इज 30 पॉइंट का ड्रॉप का पोटेंशियल है अभी भी, और इस पे 30-35 पॉइंट्स का एटलीस्ट. लेट्स सी, मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ. So what I'm going to do is I'm going to reduce the stop loss till here now, क्योंकि अब ये स्पाइक मारा तो फिर निकालेगा और वो परेशान करेगा, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ इस पर. Right, let's see if we get the drop that we want.
it to give. अगर ये डे लो चला जाता है तो मज़ा आ जाएगा. We have 5 candles which is negative on the 5-minute time frame. 1 2 3 4 and this one is the 5th candle. 4 candles already negative hain, so it should go lower. एंड अगर ये 30 पॉइंट हमारे बाय पोजीशन से विच इज़ 18885 अगर 30 पॉइंट नीचे जाता है तो आई एम गोइंग टू मेक इट ब्रेक इवन ट्रेड. अगर ये जाता है तो बिकॉज इट इज़ रिस्की. Should keep my SL at 90 18 930 something. बहुत बाइंग की बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा मुझे, बहुत बाइंग का पोटेंशियल इसमें, बट अबाउट टू टैप. जरा सा स्पेस दें कैसे, थोड़ा सा स्पेस देते हैं ऐसे, या लगभग यहाँ पे ये ठीक है. ऐसे भी जा रहा है. So it is trying to bounce from here and we are about to hit what should not hit. That's 4 negative candles. That is why I took that trade. Good 4 negative candles. On balance, volume is also decreasing. So from 2500, so it has come to 1900 now. Still see some decrease on the on balance volume.
coming into 1700s. Right. That's going to hit it, isn't it? Yep. If it goes up from here, this will behave like gold, right? कि नीचे से अब हमें ऊपर जाने का टाइम है. We made a double bottom kind of a pattern and now we are going up. But बस गोल्ड में क्या होता है, जब आप पैटर्न, ये जो कैंडल है ये पॉजिटिव बनती है, इसके अगेंस्ट में यहाँ पे क्लोज करती है, तब ये उल्टा करके जाता है. It's crazy. Yeah. So if you trade gold and Nasdaq, you will be bonkers sometimes. कि यार ये क्या हो रहा है? And look at that. Unbalanced volume has come down to 1100s now. Looks like it wants to finally drop. Do we take another position here? I really want to. Because not just want to कि वैसे ही want to, because I feel like ये नीचे जाता है. मेरा स्टॉप लॉस का स्ट्रैटेजी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा मुझे. मे बी पोजिशनिंग साइजिंग बेटर करनी पड़ेगी. बट आई स्टिल फील कि दिस इज अबाउट टू ड्रॉप. राइट, सो आई एम गोइंग टू सेल दिस अगेन एंड आई एम गोइंग टू कीप दिस हियर. अब अगर ये हिट करता है तो दैट विल बी द एंड ऑफ टुडेज ट्रेडिंग. अब अगर ये हिट करता है तो I'm still feeling like we can hit day low. So I'm just going to mark that here. Arey? Yes, this. I would like to really add on to positions when I feel confident about them, and I really feel that this is going to hit day low. I'm still waiting क्योंकि इसने 2 बार 19,000 से बाउंस कर लिया है, तो अब वापस से ही नीचे आ रहा है, तो मतलब मोमेंटम लूज हो रहा है. और ऑन बैलेंस वॉल्यूम फ्रॉम 2000 हैज कम डाउन टू 300, mere 300, so it should drop. Okay, I'm seeing some good drop. I would want this candle to close negatively first before doing anything else. Okay. Negative volume. I would like to add on to this now. So if I bring this here, that's 76, and if I sell one more and keep this, so that's around $250 of stop loss, and I'm happy with that. So that is why I would like to continue sell off for days low.
Good drop. Bringing SL closer. So one break even SL and yeah, this is nice. Let's see if we can hit day's low. Yep, still have potential for day's low. Being careful at 18,958 here. Okay, good drop. Okay, dropping nicely. Let's go. Bringing my SLs down now for some peace of mind. Come on, no, I'm closing that one. I closed one of the trades and I'm keeping this here. Should I close this or should I wait? I'll wait. So 20 more points for days low. I'm going to keep this sector now. Still dropping. We just tapped that, so I'm keeping it very nice and tight. We took the day's low liquidity. थोड़ा सा स्पेस देते हैं यार इसे, है ना? स्पेस देते हैं थोड़ा सा, यस. Trying to bounce from that. बाइंग की पोटेंशियल बहुत अच्छी तो नहीं है. अभी भी चल ही रहा है, नीचे जा ही रहा है. All right, so that took us out. So we could actually go till day's low. Proud of myself that I could actually, I was able to hold all of that without closing it early, and that is nice. That's a good improvement. Did not make much, made 0.5%, but okay, not a problem. ऑल राइट, तो अब अगर मैं ट्रेड लूँगा, पागल होऊंगा, लॉस करूँगा, इससे अच्छा ये है कि आई क्लोज माई डे हियर एंड दैट इज़ नाइस. मेरे को अच्छा लगा आज का ट्रेड करने का. आई टुक गुड डिसीजंस
एक दो बैड वंस, बट आई टुक गुड डिसीजन. जो बैड वंस थे वो भी मैंने एक एक क्वांटिटी लेके उस पर ट्रायल एंड एरर का कंसेप्ट था. ये लाइन मैंने मार्क कर रखी थी यहाँ पे एग्जैक्टली. इसने ये टैप किया है और इसने वहाँ से 50 पॉइंट का बाउंस, 60 पॉइंट्स अराउंड का बाउंस दे चुका है ये अभी तक वहाँ से. सो दैट इज़ नाइस, राइट. सो ओवरऑल गुड. आई एम हैप्पी विथ वॉट आई डिड टुडे. I hope we improve with time, day by day. I'll see you in the next one. Bye bye. Good night. Sweet dreams.